Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 4th of December. The session will be quite interesting. In this video, we will be talking about e-Sankhiki portal. Then we will be talking about Diamond Jubilee of NAF SCOB and National Meeting of Rural Cooperative Banks. Then we will be talking about the 11th edition of Indian Coast Guard exercise SAREX. Next thing we will be talking about a 100 rupees commemorative coin that has been unveiled by Finance Minister. Then we will be talking about a special purpose vehicle. Then we will be talking about a CCI. They have imposed a penalty on Meta, earlier known as Facebook, for ambushing the dominant position. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. In this video, a total of 19 important news will be discussed, students, that will be of utmost important. Apart from this, students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. The content we provide in daily basis is top-notch. We make sure to upload the daily current affairs video at 5 AM in the morning. We upload the weekly current affair, monthly current affair, and the topic wise on regular basis, so that you do not miss the important news and you can score good marks in your competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Now let's start with the national affairs, students. First thing first, you need to understand that in today's world, the data is important. If you have access to data, there is a high chance or high probability of you winning in that particular game, right? So recently, e-Sankhiki portal has been launched for seamless access to the official statistics, the data that has been conducted through surveys, the data that has been collected through census by various ministries, right? So Ministry of Statistics and Program Implementation, they have launched e-Sankhiki portal. This will provide official statistics or official data, right, that has been collected for various ministries, for various Indians, right? That includes your survey data and census data, right? Then remember, this Sankhi portal is with an API, that is application programming interface. Just remember the full form. It contains an API, right? And it ensures seamless data accessibility across various platforms, that includes your NDAP. Apart from this, other central ministries and departments share the data through their respective portals, websites and publications. Correct. So this is your e-Sankhi portal launched by Ministry of Statistics and Program Implementation. Next, we are talking about Home Minister Amit Shah. As you can see him on the left here, he participated in the Diamond Jubilee of NAF SCOB. First thing first, what is this NAF SCOB? This is your National Federation of State Cooperative Banks Limited. Diamond Jubilee, this was the 60 years of celebration of this, right? And this was your first thing. Second thing, remember, second thing is that he recently also participated in the national meeting of the rural cooperative banks, right? Coming to the first thing in this Diamond Jubilee for this National Federation of State Cooperative Banks, first two important key goals were talked about. First, highlighting the institution's contribution and achievement over the past 60 years, and second, to examine the shortcomings and the focus on improvements, right? Now, if we look at this NA, that is National Federation of State Cooperative Banks, right, they have played a very important role, correct? They have played an important role in the agriculture sector by providing various credit to the farmers. They have also helped in empowering the PCAS, that is your
primary agriculture credit societies, right? They have provided finances, that is your loans, to various entrepreneurs in rural areas so that they can grow, they can buy new technology, they can buy seed for themselves, right? Apart from this, they have also played important role in white revolution. White revolution is for what? It is for dairy sector, right? So coming back, this is your silver diamond jubilee. Second thing is Amit Shah, he also participated in the rural cooperative banks meeting, the national meeting of the rural cooperative banks. Apart from this, here you can see in the agriculture credit sector, empowering the PACS, right? New technologies and so on. Next is your 11th edition of the Indian Coast Guard exercise, SAREX. SAREX is a maritime exercise that was conducted by Indian Coast Guard. This is the 11th edition of this exercise that was held where location is important. It was held in Kochi, Kerala. Right? SAREX. What does this SAREX stands for? SAREX is your National Maritime Search and Rescue Exercise and Workshop. I repeat, Indian Coast Guard's 11th edition exercise SAREX, that is Search and Rescue Exercise and Workshop, held in Kochi, Kerala from 28th of November to 29th of November. Then there is a theme for this exercise that I want you all to remember: enhancing search and rescue capabilities through the regional collaboration. Next, if we talk about ICG, Indian Coast Guard, who is the Director General of Indian Coast Guard? Paramesh Shivamani, headquartered in New Delhi. And just go through these points, it will help you. Next is our finance minister. Who is our finance minister? Nirmala Sitharaman, right? She has unveiled a 100 rupees commemorative coin to mark the centenary of State Bank of India's iconic Harmonian Circle branch in Mumbai, Maharashtra. So in order to celebrate the branch 100 year, a commemorative coin of 100 rupees has been released by Finance Minister Nirmala Sitharaman. She has also unveiled the 5th edition of the evolution of the State Bank of India, chronicling a transformative era of SBI's journey between 1981 and 1996. Next is REC Power Development and Consultancy Limited. They have successfully transferred the special purpose vehicle for the Khavda 5A high voltage direct current transmission project to Power Grid Corporation of India Limited. This official handover ceremony was held in Gurugram, Haryana. So directly remember, it is REC that handed over this SPV to whom? To Power Grid Corporation of India Limited. Correct? This project foresees the construction of the two advanced HVDC, that is your high voltage direct current line terminal stations with capacity of 6,000 megawatt each. Next is CCI, that is your Competition Commission of India. They have imposed 213 crore rupees penalty on Meta, earlier that was known as Facebook, for ambushing the dominant position. That means they were misusing their dominant position in the India's OTT and in India's OTT messaging and online display advertisement marketing. They were using the WhatsApp position, because we all know that WhatsApp, Instagram, they are owned by Facebook, that is your Meta only, right? So they were using this data, right? They were using these organizations so that they can leverage on other players. Apart from this, CCI has also directed WhatsApp to suspend sharing user data for advertising purposes for next 5 years. Correct? So, how much amount penalty has been imposed on Meta? It is 213 crore rupees penalty. Next is international affairs. Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Nigeria, Brazil and Guyana from 16 to 21st of November 2024. Right? So here remember Nigeria, Brazil and Guyana. Something that you need to remember here is that this was the first visit of Prime Minister of India to Nigeria in 17 years since the establishment of their relation in 2007. Apart from this, Prime Minister Narendra Modi, correct, if we talk about him, one thing that you need to important thing that you need to remember here is that Prime Minister visited in Brazil, Rio de Janeiro on 18th of November to participate in the G20 summit, right? On 18th of November, this was hosted by Lula de Silva, the Brazilian president. Correct? And during this G20, New Delhi leaders declaration was also signed, right? Delhi declaration was signed here, and we have discussed this in detail, students, in our daily current affairs video. What was this Delhi declaration? This is your homework. Comment below and let me know.
Correct. Next thing, remember, if we talk about here, when Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Nigeria, during his visit, he committed and he pledged that India will be providing 20 tons of humanitarian aid that will include your medicines, food, right, to help the Nigeria's flood relief efforts. Correct. Apart from this, Prime Minister Narendra Modi was conferred with Grand Commander of the Order of Niger. Right, this award was honored to him. It was honored to Prime Minister Narendra Modi, and this award was given for his statesmanship and extraordinary contribution to enhance the relation between India and Nigeria. Also, Prime Minister Narendra Modi is the first foreign leader to be conferred with this award since 1969. Next, as I mentioned, for Rio de Janeiro, Brazil, on 18th of November, Prime Minister Narendra Modi took part in the G20 summit. Next is our India. They have signed a final act of Riyadh Design Law Treaty. Now, what is this treaty about, right? You should definitely know. So, first thing first, it is India, correct? India has signed this final act, correct, of the Riyadh Design Law Treaty. This will make a significant milestone, correct, after the 2 decades of negotiation on this. This treaty was adopted by the member states of WIPO, that is your World Intellectual Property Organization. This will simplify the registration process for the industrial designs across various jurisdictions. If we talk about this here, the Kingdom Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia, it hosted the diplomatic conference that concluded and adopted this design law treaty. Right, this diplomatic conference represented the final stage of this treaty negotiation. And if we talk about this Riyadh Design Law Treaty, this will improve the industrial design protection. It will have standards, right, that how can we reduce the administrative burden, streamline the design registration process, and also this will focus on the SMEs, startups, and independent designers. Right. Apart from this, one more thing you need to remember, that India has seen a significant surge in the design registration with more than 120% increase in the domestic filing and 25% growth in the design application over the past 2 years. Next, India and International Solar Alliance partnered for solar energy projects in 4 Indo-Pacific countries. So our country, India, right, and in India too, it is Ministry of External Affairs and the International Solar Alliance. They have partnered together that will enhance the energy access and reliability in the Indo-Pacific countries. Under this partnership, International Solar Alliance, they will serve as the project implementing agency, with while India will be contributing $2 million towards the project. Correct? Take a note of this. This initiative will provide clean energy transition, right, and will help in the sustainable development in the Indo-Pacific regions. Moving on, next is UNESCO's roadmap for the global tsunami preparedness by 2030. So UNESCO, they have unveiled a roadmap, right, that is marking the 20th anniversary of the devastating flood or tsunami that took place in 2004 in the month of December, right? And now UNESCO is helping various organizations all around the world so that they can help make the areas tsunami ready by 2030. Correct. This initiative was announced during an international conference held in Indonesia, and under this tsunami ready program, over 30 countries have established critical early warning systems, with 26 Indian and 12 Indonesian coastal communities recognized as tsunami ready. Also named the state that was named as tsunami ready, an Indian state that was named tsunami ready by UNESCO. We did this some 2 to 3 days back, right? So do let me know. This is also your homework. Correct. Next we are talking about banking and finance. A year after RBI notified PACB norm, only 4 entities received the license. What is this PACB? PACB is your payment aggregator cross-border license, right? That means payment aggregator license is basically when you can receive payments, right, from India, right? But payment aggregator cross-border, that you can also receive the payment from different countries. Correct. So recently it is cash free. Let me show you here. Cash free payments, Amazon Pay, BillDesk, and Adyen India. These are the 4 companies that have received the payment aggregator cross-border license. Right. This is in contrast with the 41 companies that have been approved to function as a online payment aggregator. Take a note of this. And in India,
cash-free payments. They became the first company to receive this payment aggregator cross-border license in July 2024. Right. Next is HDFC Bank. They have launched Pragati Saving Account for semi-urban and rural India. Right, name is Pragati Saving Account. Launched by which bank? Launched by HDFC Bank. It is launched for the rural and semi-urban people in India. This scheme was previously known as, or this account was previously known as Farmer Savings Account. This Pragati Saving Account was earlier known as Farmers Saving Account. Apart from this, HDFC Bank, they will continue to support the rural economies and drive financial inclusion in them. Next, if we talk about HDFC Bank, can you tell me who is the Managing Director and Chief Executive Officer here? Shashidhar Jagdishan, headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in 1994. Moving on, next is World Bank. They have approved 225.5 million for the Element project in Tripura, Nagaland. I repeat, World Bank, they have approved how much amount? They have approved $225.5 million. It is for the Element project that will be in Tripura, Nagaland. What is this Element? Element stands for Enhancing Landscape and Ecosystem Management. This decision is expected to benefit more than 7 lakh peoples across more than 400 villages in the northeastern Indian states. Right? This funding comprises of a loan from IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development. The maturity period here will be 12 years with a grace period of 4.5 years. This project will also receive a complimentary grant of $2.4 million. If we talk about this Element project, this will conserve and restore 1 lakh hectares of forest for biodiversity and tribal livelihood. It will prevent 4,35,000 tons of carbon emissions annually. It will enhance soil conservation, improve water availability, support local ecosystems. This will create 60,000 jobs focusing on youth, women through forest-based entrepreneurship, and it will also develop value chains for forests like agrowood, bamboo, honey in partnership with various private sector. If we talk about World Bank, who is the president of World Bank? Ajay Banga, headquartered in Washington DC, established in 1944. Next is Canara HSBC Life Insurance. They have launched OmniGen AI. What is this Gen AI? Generative Artificial Intelligence, right? So Canara HSBC Life Insurance, they have launched this OmniGen Artificial Intelligence. That is a first of its kind generative AI solution that will do the risk evaluation in underwriting. This tool built on the AWS Bedrock platform. AWS is your Amazon Web Service, right? It is a cloud platform, right? And if you remember, RBI is also planning to launch their own affordable cloud platform. Correct? So this OmniGen AI, this will basically underwrite by analyzing the data for quick, accurate decisions that will reduce the biases and errors. Correct? This will basically identify the trends, ensure the precise, time efficient and cost effective evaluations, correct, for the high risk cases. It will be using LLM. What is LLM? LLM is your large language model to automate the entire process. Then if we talk about Canara HSBC Life Insurance, that will be launching this OmniGen AI. Who is the Managing Director and Chief Executive Officer of Canara HSBC? Anuj Mathur, headquartered in Gurugram, Haryana. Moving on, next is Economy and Business. NABL QCI. What is NABL? That is your National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, right? This comes under your QCI, that is your Quality Council of India, and they together have signed a memorandum of understanding with CREDAI, that is your Conference for Real Estate Developers Association of India. This will enhance the quality standards in the temporary site testing laboratories. Also, this MOU was finalized on the CREDAI's Silver Jubilee celebration on 25th of November that was held in New Delhi in the presence of Piyush Goyal ji. Correct? This temporary site testing laboratories, they play a very important role in the civil engineering projects that exceeds 5,000 square feet area, and with the help of this testing, a clearance is given that the site is tested properly. There is quality assurance here, right? And the product that is the quality of the material that is being used here is up to the mark and it's safe. Next is awards and recognition. So 52nd International Emmy Awards were held and Veer Das became the first Indian to host the event. So we are talking about the International Emmy Awards, right? And
these international Emmy Awards, where they were held in New York, USA, right? They were the 52nd edition of these awards. And who became the first Indian to host this event? Veer Das became the first Indian to host this event. Take a note of this, very important. Next, there are some awards winners also here. Just go through the winners once, correct? And if we talk about the winners here, right, I just repeat, go through the winners once again. There are multiple winners here, so there is a less chance of being asked, but still you should be aware if in turn if one person the question is asked. Next is appointments and resignations. Dr. Jaitirath Raghavendra Joshi has been appointed as the Chief of BrahMos Aerospace. I repeat, Dr. Jaitirath Raghavendra Joshi appointed as the new Chief of the BrahMos Aerospace, and this position will be coming into effect from 1st of December 2024. He will be succeeding whom? He will be succeeding Atul Dinkar Rane. Right, he held this position since 2021. Apart from this, if we talk about Dr. Jaitirath Raghavendra, right, he is a prominent figure and he has contributed significantly to the India's missile program such as your Prithvi, Agni and so on. And he is a certified trainer with over 600 candidates in level 1 and level 2 techniques. Apart from this, he also served as the chairman of the Chennai, Tamil Nadu based Indian Society for Non-Destructive Testing. Moving on. Next is Appointments Committee of the Cabinet, that is ACC, has approved 1 year extension to PESB, that is your Public Enterprise Selection Board Chairperson Mallika Srinivasan. So Mallika Srinivasan has been given 1 year extension as the chairperson of PESB. Moving on. Next is important is AAI. What is AAI? It is your Airport Authority of India, right? So Airport Authority of India's Aviation Safety Awareness Week was held from 25th to 29th of November, right? This is basically to, and this week is observed basically to create awareness about the aviation safety, right? If we talk about the Airport Authority of India, who is the chairman here? Vipin Kumar, established in 1995, headquartered in New Delhi. Next, one more thing, remember there are certain schemes here that are related to the aviation, such as your regional connectivity scheme, that is your Ude Desh Ka Aam Nagrik, Udan scheme, RES Udan scheme. Then there is your financial support to the selected airline operators in the form of the viability gap funding. Then Krishi Udan scheme 2.2 launched in 2021 to provide air transportation and logistics support for the perishable agri produce. Next we are talking about state news. Assam cabinet has approved the renaming of Karimganj as the Shri Bhumi district. I repeat, Assam cabinet approved the renaming of the Karimganj as the Shri Bhumi district. Right, take a note of this. And here this Assam cabinet was led by, or this cabinet meeting was led by whom? Assam's Chief Minister Himanta Baswa Sarma ji. If we talk about Shri Bhumi, it is the meaning as the land of the Ma Lakshmi, and this is the name of this Karimganj. The new name of this Karimganj district is Shri Bhumi district. So that's all for the day, students. Now let's move to the quick one-liner revision. Ministry of Statistics and Program Implementation has launched e-Sankhiki portal for seamless access to official statistics data. Then Home Minister Amit Shah participated in the Diamond Jubilee of NAFCOB and National Meeting of Rural Cooperative Banks. Then we are talking about the 11th edition of the Coast Guard exercise, Indian Coast Guard exercise SAREX, held in Kochi, Kerala. Then Finance Minister has unveiled a 1,000 rupees, 100 rupees commemorative coin to mark 100 years of SBI's Horniman Circle branch, that is in Mumbai. Then REC, they transferred the Khadwa HVDC transmission project to Project Special Purpose Vehicle to PGCIL. Then CCI imposed 213 crore rupees penalty on Meta for abusing the dominant position. Then Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Nigeria, Brazil, Guyana from 16 to 21st of November. India has signed a final act of Riyadh Design Law Treaty. Then India and International Solar Alliance partnered for solar energy projects in 4 Indo-Pacific countries. UNESCO's roadmap for global tsunami preparedness by 2030. A year after RBI notified the payment aggregator cross-border norms, only 4 entities has received the license. Then HDFC Bank has launched Pragati Saving Account for semi-urban and rural India.
Then World Bank, they have approved $225.5 million for Element project in Tripura, Nagaland. Canada HSBC Life Insurance, they have launched OmniGen AI. NABL QCI and CREDI, they have joined hands to boost the quality assurance in the construction projects so that the better construction projects or better quality of the construction projects can be delivered. Then 52nd International Emmy Awards were held in New York, USA, and Vedas became the first Indian to host the event. Next, Dr. Jyotirath Raghvendra Joshi appointed as the new chief of the BrahMos Aerospace. ACC has approved 1 year extension to the PESB chairperson Malika Srinivasan. Then Airport Authority of India's Aviation Safety Awareness Week observed from 25th to 29th of November. Then Assam Cabinet has approved the renaming of Karimganj as Shri Bhumi district. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. Which organization has recently signed an airframer contract with Safal Helicopters Engines Private Limited to develop and supply a helicopter engine by the name Aravali? So, name of the helicopter engine Aravali. So, which organization has signed this airframer contract with Safal Helicopters Limited? It is your Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL. And this engine, it has been named after the Aravali mountain ranges. Next, name the bilateral naval exercise between India and France that was held in Mediterranean Sea from 2nd to 4th of September 2024. So what is the name of that bilateral exercise? The exercise is Exercise Varuna. Right? Then this exercise Varuna, it is the 22nd edition of this exercise held between India and France. Take a note of this. Right? And in this, from Indian side, INS Tabar took part in this exercise. Next, name the aerospace company that has recently achieved the successful maiden flight of the India's first indigenous unmanned bomber aircraft, that is FWD 200B. So what is the name of that company? That is Flying Wedge Defense and Aerospace. This aircraft is classified as a medium altitude long endurance, that is MALE unmanned aerial vehicle, and it has a wingspan of 5 meters and a length of 3.5 meters. It can fly at a cruising speed of 152 km per hour with a maximum speed of almost 250 km per hour. Next is in September, India successfully launched Agni 4 missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha. That is Agni 4. It belongs to which type of missile? So this Agni 4, this is a intercontinental ballistic missile, and it was India that has successfully tested this Agni 4 missile from the ITR in Chandipur, Odisha. This Agni 4, this is a surface to surface ballistic missile that has a range of 4,000 kilometers. Next, which shipbuilding company has recently launched two indigenously designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft named the INS Malpe and INS Mulki? So which is that shipbuilding company? It is Cochin Shipyard Limited that has developed this 4th and 5th of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft project. 4th is INS Malpe and the 5th is INS Mulki. Next, name the military exercise between India and USA that has recently commenced at the Foreign Training Node in Rajasthan. What is the name of that exercise? The exercise is Yudh Abhyas, right? And it will run till 22nd of September 2024. This is the 19th edition of this Yudh Abhyas exercise held in Alaska, USA, right? I repeat, this the 19th edition. I repeat, one more thing, correction here. The 19th edition of Yudh Abhyas was held in Alaska, USA, but this time this is the 20th edition of this exercise that we are talking about, that was held where? In Rajasthan. Next, which defense company has recently signed a contract worth 26,000 crore rupees with the Ministry of Defense for the procurement of 240 AL-31FP aero engines for Sukhoi 30 Mark 1 aircraft of the Indian Air Force? So which is the defense company? It is Hindustan Aeronautics Limited. Next, name the country where Indian Navy's P-8I aircraft recently reached to participate in the 16th edition of exercise Kakandu. So what is the country where Indian Navy's aircraft reached? It is Australia, right? Then in this exercise, more than 3,000 personals over 32 nations took part.
Next is name the missile that the Indian Navy and DRDO successfully tested in flight from the launch pad of the ITR in Chandipur off the coast of Odisha. What is the name of that missile? That is VLSRSCM, that is Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile. Next. Next is name the joint exercise that was recently conducted between Indian Air Force and Royal Oman Air Force in Oman. What is the name of that exercise? The exercise is Eastern Bridge. And this bilateral exercise began on 11th of September and it will end on 22nd of September. Also remember the 5th edition of Al Naja exercise held between Indian Army and Royal Army of Oman. Right, so air exercise is Eastern Bridge and the exercise between the armies is Al Naja. Next, Ministry of Defence, they approved the Indian Navy's 2500 crore rupees plan to develop what? It was to develop the extra large unmanned underwater vessel. The vessels are expected to strengthen India's defence against enemy submarines and surface vessels. Next, which city has recently hosted the Indian Defence Aviation Expo, that is IDAX 2024? So it is Jodhpur, Rajasthan, where this Jodhpur, Rajasthan, that is Jodhpur is the city where it hosted the Indian Defence Aviation Expo 2024. Also, Tarang Shakti exercise was concluded here. Tarang Shakti is one of the largest India's first multinational air exercise hosted by our Indian Air Force. Next, name the state-of-the-art Kalvari submarine escape training facility that was recently commissioned by the Indian Navy at INS Satwana in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, recently, what is the name of that facility? It is Vinitra. Next is students, science and technology. Which company has recently launched Sentinel-2C satellite aboard last Vega rocket for environmental monitoring? The name of the company is Ariana Space. This satellite, it will serve as the Earth observation satellite for the European Union, which will provide important data for the environmental, correct, or we can say important data for the environment monitoring. Next, name the India's first space station which will be launched by 2028 by ISRO. So India's space station, it is Bharatiya Antariksh Space Station, and the entire setup will have 5 modules. First module will be launched in 2028 and it is expected by 2035 India will have our own space station. Next, which company has recently announced plans to set up India's first multi-sensor all-weather high revisit Earth observation satellite constellation? What is the name of that organization? It is Naib Space Private Limited. Right? It aims to promote India's defense and space capabilities that will promote self-reliance in the defense sector. And also you will be seeing with this in the coming 5 to 6 year 40 low earth orbit satellites will have, or the constellation will have 40 to 50 satellites here in the next 5 to 6 years. Next, name the SpaceX crew mission that has recently led by an American billionaire entrepreneur Jared Isaacman returned to Earth following the successful completion of the world's first private spacewalk. So who did the first private spacewalk? Jared Isaacman. Right, he led this mission and it is the mission of spacewalk. Question asked here is that what is the name of that SpaceX crew mission? So the mission's name is Polaris Dawn. Next, which country has recently launched the Chandrayaan-1 research satellite into orbit by QM-100 satellite carrier? So this both Chandrayaan-1 satellite and QM-100 satellite carrier, it is of Iran. Right, this Chandrayaan-1 satellite, it weighs around 60 kilograms and it is designed to test the hardware and software for orbital maneuver technology. Next, student, is our homework section. First, tell me where was India's first electric double-decker bus launched? Name the state and also the city. Second, recently, tell me first Hyperloop project. India's first Hyperloop project. What is this Hyperloop project and it is coming between which two cities? Third, tell me who has been appointed as the new president of Sri Lanka. So these are your 3 homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button. And now let's move to the Hindi segment of this video.
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 4 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 19 इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, जहां पे हम बात करेंगे ई सांख्यिकी पोर्टल के बारे में। देन हम बात करेंगे डायमंड जुबली सेलिब्रेट की गई NAFCOB की। देन 11th एडिशन ऑफ सारेक्स एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक 100 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया, किस चीज़ को ऑनर करने के लिए लॉन्च किया गया। देन अभी हम बात करेंगे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर किया गया टू PGCIL। देन हम बात करेंगे पेनल्टी इम्पोज की गई है मेटा पर, किस चीज़ के लिए और कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। रेगुलरली हम वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज अपलोड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स के साथ। हम बात करेंगे ई सांख्यिकी पोर्टल। देखो, इससे पहले समझो कि आज की दुनिया में ना डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम AI की बात करते हैं, ये भी डाटा को यूज़ करके ही आपका गेस्ट आउटपुट देता है, राइट। उनको स्टडी करके पूरे डाटा को एनालाइज करके ही आउटपुट देता है। तो डाटा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, राइट। तो हम जानते हैं, और हम जब सेंसस कराते हैं, जब हम सर्वेस कराते हैं, तो सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है। तो उस डाटा को स्टडी करने के लिए, उस डाटा का एनालिसिस लाने के लिए, बेटर इन्फॉर्म्ड एनालिसिस लाने के लिए, करेक्ट, ताकि हम बेटर आउटपुट्स ले सकें उस डाटा की मदद से, ये ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ये एक API रहेगा, अपने API के साथ आता है, राइट। इसमें आप देखेंगे जो डाटा वेबसाइट्स पे, पोर्टल्स पे, पब्लिकेशंस पे शेयर होता है, वो यहाँ पर आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर बेटर इन्फॉर्म्ड आउटपुट। बड़ी बड़ी कंपनियों को डाटा की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें, राइट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डाटा, ठीक है। तो मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्टिसिपेट किया डायमंड जुबली में ऑफ NAFSCOB। ये क्या है NAFSCOB? ये आपका नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड। इसकी अभी डायमंड जुबली ऑब्जर्व की 16 ईयर की। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, इस डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन के दौरान जो फोकस किया गया ना, कि वो हम कैसे इस इंस्टीट्यूशन का जो NAFSCOB है, इसके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं पिछले 60 सालों में, राइट। इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, इनको क्या उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, उन चीज़ों के ऊपर बात की गई। अगर हम यहाँ पे बात करें NAFSCOB की, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में, क्योंकि ये आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं इसमें। तो फाइनेंस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपके बिजनेसमैन है, फार्मर्स हो गए, उनको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्प किया है इन्होंने। एंड इससे जो लोगों के पास फंडिंग रही है, पैसा बना रहा है ताकि वो अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सकें, वो बहुत गेम चेंजर रहा है। इसी के अलावा PACS की बात करें तो PACS क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इनको भी यहाँ पे बूस्ट करने में इनका हेल्प रहा है, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वाइट रेवोल्यूशन, जो कि आपका डेयरी सेक्टर से आता है, उसमें भी NAFSCOB का पूरा रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेक्स्ट है हम बात करेंगे 11वीं एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सारेक्स की। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा होस्ट कराई गई थी एक्सरसाइज। हुई कहाँ पर थी? कोची, केरला में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, राइट। इस एक्सरसाइज की थीम क्या रहेगी? एनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। ये जो एक्सरसाइज है सारेक्स,
क्या है? नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, राइट। ये कहाँ पर हुई? कोची केरला में 28 नवंबर से 29 नवंबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ये तो थी 11वां एडिशन। इससे पुराना जो 10वां एडिशन था वो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। अगर मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? प्रमेश शिवामणि, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन अनवेल किया है। क्यों? टू मार्क द 100 ईयर्स ऑफ एसबीआई की हॉर्निमन सर्कल ब्रांच जो कि मुंबई में है, उसको ऑनर करने के लिए एक 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया। इसी के साथ साथ 5th एडिशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे इन्होंने राइट सम्मानित किया। करेक्ट। इसी के साथ साथ मार्क करेंगे, ये 100 रुपीज़ का कॉइन रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी ब्रांच के लिए? एसबीआई की हॉर्निमन सर्कल ब्रांच जो कि मुंबई महाराष्ट्र में, उसको ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, इन्होंने अभी ट्रांसफर कर दिया एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द खावड़ा 5A वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो HVDCA ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इसका एसपीवी ट्रांसफर कर दिया किसको? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड इसका जो ऑफिशियल हैंडओवर सेरेमनी हुई थी गुड़गांव हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इंपोज करा 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी मेटा पर, जिसको हम पहले फेसबुक जानते हैं। देखो मेटा ही ऑन करता है व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, राइट, फेसबुक को। तो इनका आप देखिए कितना बड़ा इनके पास डाटा है, इनके पास कितना लोगों का कितना डाटा रहता है। करेक्ट। और इनको अगर अपने एड्स भी चलाने होते हैं तो उसको ये इस डाटा को यूज़ करते हैं। एंड जो सेकंड प्लेयर्स होते हैं, राइट, उनको ये इजीली फ्लश आउट कर देते हैं अपने इस इतने ह्यूज डाटाबेस की मदद से। करेक्ट। तो ये अनफेयर कंडीशंस यहाँ पे, अनफेयर प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। एंड इसीलिए सीसीआई ने इनको भी व्हाट्सएप को डायरेक्ट किया है कि जो भी वो यूज़र डाटा है एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए जो भी गैदर करते हैं उसको वो सस्पेंड कर देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि अपने जो कॉम्पिटिशन है उसको भी फेयर एडवांटेज मिल सके एंड फेयर तरीके से वो भी मार्केट में सस्टेन कर सकें एंड ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड गायना में विजिट पे थे 16 से 21 नवंबर। देखो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से। ये इंपॉर्टेंट है, किनको सम्मानित किया गया? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से। एंड वो पहले फॉरेनर कौन बने जिनको इससे सम्मानित किया गया? वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसी के अलावा याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ब्राज़ील में थे, इन्होंने रियो दे जनेरियो में ब्राज़ील में थे, इन्होंने G20 समिट को अटेंड किया था। एंड इसी के दौरान G20 ने दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया था। ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट करके मुझे नीचे बताओ कि दिल्ली डिक्लेरेशन एक्चुअल में था क्या। ठीक। इसी के अलावा हम देखेंगे इंडिया और गायना का बीच में हाइड्रोकार्बन्स को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को लेके, हेल्थ को लेके, मेडिकल को लेके, इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर, यूपीआई को लेकर यहाँ पे कई सारे एमओयू सामने देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ गायना ने एक पेड़ माँ के नाम मूवमेंट में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया कि अपने मदर के लिए एक पेड़ तो लगाना बनता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। इंडिया ने साइन किया एक फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। ये रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी बेसिकली क्या है? वीपो, राइट, दिस ट्रीटी बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ वीपो के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है, रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। करेक्ट। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो ट्रीटी रहेगी ना, बेसिकली क्या है ये ट्रीटी? रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। इसके अंडर जो भी आपके आर्टिशंस हैं, राइट, या फिर जो भी आपके वर्कर्स हैं जो कुछ बनाते हैं, करेक्ट, जो आपके डिज़ाइन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस होती हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे इस रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी के अंदर। राइट। जो सबमिशन होगा टाइम लिमिट वो कम हो जाएगा। राइट। जो लॉस्ट राइट्स होंगे वो रीइंस्टेट हो जाएंगे। राइट। आप अपने क्लेम्स को इजीली यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। एंड एबिलिटी टू फाइल मल्टीपल डिज़ाइंस इन अ सिंगल एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्यों इंडिया को कहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा कि इंडिया में जो डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशंस हैं वो बढ़ गए हैं। 120% से यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है डिज़ाइन से रजिस्ट्रेशन में पिछले 1 से 2 सालों में। इससे क्या होगा? जो MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी है। करेक्ट। कहाँ पर साइन हुई? इंडिया ने साइन करी। करेक्ट। वीपो के मेंबर्स ने साइन करी है इसको। करेक्ट। एंड ये बेसिकली आपका हेल्प करेगी डिज़ाइनर्स को अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन्होंने पार्टनर किया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इंडो पैसिफिक कंट्रीज में। इस पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया से हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट, एंड जो आपके इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं वहां पर ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेंगे। इसी के अंडर हम देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी एंड हमारा इंडिया यहाँ पे $2 मिलियन को फंड करेगा। इसी के अलावा आप देखेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनेस्को के रोड मैप की बात करेंगे फॉर ग्लोबल सुनामी प्रिपेयरनेस बाय 2030। 2004 में हम जानते हैं बहुत बड़ी सुनामी आई थी, बहुत डिवेस्टेटिंग इफेक्ट हुआ था इंडिया के कोस्टल एरियाज पर, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए एंड उसकी 20वीं एनिवर्सरी इस बार हमने सेलिब्रेट की है 2024 में। इवन अभी एक स्टेट को, इंडियन स्टेट को डिक्लेयर किया गया था सुनामी रेडी स्टेट। वो स्टेट का नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, अभी हमने पढ़ा है 3-4 दिन पहले, राइट। तो प्रिपेयर्डनेस रहने के लिए कि कल को अगर फिर से ऐसी कोई सुनामी आती है तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहें और इतना ज़्यादा डिवेस्टेशन हमें ना देखने को मिले। तो इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहने के लिए ये ग्लोबल सुनामी प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। एंड इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर कल को कोई भी ऐसी सिचुएशंस फिर से हमें देखने को मिलती है तो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे एंड उसको कैसे टैकल करना है, उस पर क्या हमें एक्शन लेना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम पहले से ही ध्यान रख सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉन्च किया गया था एंड यहीं पे याद रखेंगे 26 इंडियन एंड 12 इंडोनेशियन कोस्टल ऐसी कम्युनिटीज़ है जिनको सुनामी रेडी करने की बात की गई है 2030 तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। ईयर आफ्टर आरबीआई नोटिफाइड पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर नॉर्म्स, सिर्फ 4 एंटिटीज ने रिसीव किया ये लाइसेंस, राइट। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है कि आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, कस्टमर से, करेक्ट। तो क्रॉस बॉर्डर क्या हो गया, आप दूसरी कंट्री से भी रिसीव कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने नोटिफाई किया कि जो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज हैं 2023 में, वो सिर्फ 4 कंपनी है। कैश फ्री पेमेंट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, कैश फ्री पेमेंट्स, और ये पहली कंपनी बनी थी टू रिसीव दिस लाइसेंस। देन अमेजॉन पे, बिल्डेक्स एंड एलियन इंडियन, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो क्या है, पीएसीबी लाइसेंस, जो एंटिटीज दैट प्रोवाइड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द परमिसिबल गुड्स। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक। इन्होंने लॉन्च किया प्रगति सेविंग अकाउंट को। प्रगति सेविंग अकाउंट को पहले हम जानते थे फार्मर सेविंग अकाउंट के नाम से, राइट। एंड ये सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है शशिधर जगदीशन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जरूर याद रखिएगा कि प्रगति सेविंग अकाउंट को पहले क्या कहते थे, वो था आपका फार्मर सेविंग अकाउंट, या फिर ऐसे आ जाएगा कि फार्मर सेविंग अकाउंट का नया नाम क्या है, वो है प्रगति सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने अभी $225.5 मिलियन का अमाउंट अप्रूव करा है एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन त्रिपुरा नागालैंड। ये एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, स्पेसिफिकली त्रिपुरा एंड नागालैंड में जो आपका इन्वायरमेंट है उसको बेटर करने के लिए, राइट, रिस्टोर करने के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड, 4,35,000 टन ऑफ कार्बन एमिशंस को कंट्रोल में रोकने के लिए, राइट, उसको एनवायरनमेंट में जाने से रोकने के लिए। देन सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए 60,000 से भी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करने की बात की गई। इसी के अलावा हम देखेंगे आईबीआरडी, जो कि है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने लोन प्रोवाइड करेंगे आने वाले 12 सालों के लिए लोन रहेगा एंड 4.5 साल का यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी हमें देखने को मिलेगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने ओमनी जेन एआई को लॉन्च किया है। देखो जनरेटिव एआई क्या होता है, बहुत पावरफुल चीज़ है जनरेटिव एआई। आप आने वाले सालों में इसके बारे में ज़रूर सुनेंगे क्योंकि ये गेम चेंजर रहने वाला है, ये एक रेवोल्यूशन की तरह आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जानते ही हैं, तो कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ओमनी जेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का एक वेब सॉल्यूशन रहेगा जो प्रोवाइड करेगा रिस्क इवैल्यूएशन को इन अंडरराइटिंग। इस टूल को बनाया गया है AWS बेडरॉक प्लेटफॉर्म के द्वारा। AWS ये आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म, और हम जानते हैं आरबीआई भी अपना खुद अफोर्डेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात कर रहा है, राइट। इससे क्या होगा, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, राइट। ये जो ओमनी जेन एआई है ये अंडरराइट करेगा
by analyzing the data for quick, accurate decisions, reducing biases and errors, and the solution automates fraud detection and shortens the turnaround time for policy issuance and claim processing. एंड ये LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड रहेगा. HSBC लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो है अनुज माथुर. हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में. नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर. NABL, QCI एंड क्रेडाई इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स टू बूस्ट द क्वालिटी एश्योरेंस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. देखो जो रियल एस्टेट में होते हैं ना, रियल एस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. किस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है. अगर वो अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा तो जो प्रोजेक्ट है वो सालों साल टिका रहेगा, राइट. सेंचुरी तक वो 100 साल भी टिक जाए, 200 साल भी चल जाए, राइट. तो NABL जो कि है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आता है. इन्होंने क्रेडाई के साथ मिलकर, क्रेडाई क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ताकि जो वो साइट टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनके स्टैंडर्ड को यहाँ पे टेस्ट किया जा सके. जो ये साइट टेस्ट टेम्परेरी साइट टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है ना, यही आपके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो कि 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है उनकी साइट टेस्टिंग करती है. क्या वहाँ पे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वहाँ पे जो ज़मीन है क्या वो ठीक ज़मीन है, क्या वो पानी वाले एरिया में तो नहीं आती, वहाँ पे सॉइल कैसी है, राइट. क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वाटर टेस्टिंग, वो सब इनके द्वारा करा जाता है. एंड बहुत ज़रूरी है ये किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले. नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन. हम बात करेंगे 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2024 की. इन 50 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए कहाँ पे थे? न्यूयॉर्क, USA में. एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बन जाती है ना वो ये है कि कौन थे वो इंडियन जो पहले इंडियन बने जिन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया. वो है वीर दास. इससे रिलेटेड कई सारे अवार्ड्स भी हैं, आप अवार्ड्स को एक बार PDF से ज़रूर पढ़िएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर. डॉक्टर जयथिरथ रघवेंद्र जोशी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस. आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं. ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे अतुल दिनकर राणे को, जो कि 2021 से इस पोजीशन पे थे. अगर हम बात करें डॉक्टर रघवेंद्र जोशी की, राइट, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे हैं इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम में, जैसे पृथ्वी में, अग्नि में, राइट. देन इन्होंने 600 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है अल्ट्रासोनिक, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, रेडियोग्राफी में, राइट. एंड इनको 2022 में डॉक्टर एन कौंडल राव मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं ECC, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट. इन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन अप्रूव किया है PESB को, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरपर्सन है मल्लिका श्रीनिवासन, उनको 1 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया है. नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है 25 से 29 नवंबर तक. यहाँ पे जो एविएशन है उसकी सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूं तो कौन रहेंगे? विपिन कुमार. 1995 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था. नेक्स्ट यहीं पे याद रखेंगे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो आपकी एविएशन सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक. फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सेलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर्स इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग. देन कृषि उड़ान स्कीम 2.0 जो 2021 में लॉन्च की गई थी, ताकि जो एग्री प्रोड्यूस है, पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस है, जैसे आपके फार्म वो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट. तो उनके लिए प्रोवाइड एयर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट का प्रोवाइड कराने का ये काम करता है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स. असम के कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ करीमगंज एज द श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट. तो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, उसका नया नाम क्या रहेगा? श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट. एंड यूनियन कैबिनेट असम की कौन चेयर करते हैं? चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा. जैसे अगर हम वर्ल्ड के इंडिया की बात करें तो इंडिया के यूनियन कैबिनेट कौन चेयर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो असम की यूनियन कैबिनेट कौन चेयर करते हैं? उनके चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी. श्रीभूमि क्या मतलब है? द लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी, राइट. तो ये नया नाम रहेगा श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट, किसका? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का, जो कि असम में डिस्ट्रिक्ट रहेगी. तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ई संखी पोर्टल को लॉन्च किया. होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्टिसिपेट किया इन द डायमंड जुबली. देन 11वां एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हुई सारेक्स. फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया. REC ने ट्रांसफर किया खाड़वा HVDC ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट SPV को टू PGCIL. देन CCI ने इम्पोज किया 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी ऑन मेटा फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन. देन PM मोदी ने विजिट किया नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड गायना को. इंडिया ने एक फाइनल एक्ट साइन किया फॉर रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी. इंडिया एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने पार्टनर किया ताकि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में. यूनेस्को का रोड मैप आया फॉर ग्लोबल सुनामी प्रिपेयरनेस बाय 2030. हम बात करेंगे
पेमेंट एग्रीगेटर, क्रॉस बॉर्डर नॉर्म्स की सिर्फ 4 एंटिटीज़ को ये लाइसेंस रिसीव हुआ एज पर आरबीआई। देन एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया प्रगति सेविंग अकाउंट फॉर सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने $225.5 मिलियन अप्रूव किए एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन त्रिपुरा, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए। देन कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया ओमनीजेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एनएबीएल क्यूसीआई एंड क्रेडाई के बीच में पार्टनरशिप हुई टू क्वालिटी एश्योरेंस को बूस्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। देन 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट किसने किया इस इवेंट को? वीर दास ने, ये पहले इंडियन बने। डॉक्टर जयथिरथ रघवेंद्र जोशी इनको अपॉइंट किया गया नया चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। एसीसी ने अप्रूव किया 1 साल का एक्सटेंशन टू पीईएसपी चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 25 से 29 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। एंड असम कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ करीमगंज एज श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं उस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट। एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की, मार्क करेंगे। 2 से लेके 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। एंड इंडिया से आईएनएस ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट। तो यह है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम ITR इन चांदीपुर उड़ीसा। जो ये अग्नि 4 है ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये रहने वाली है। नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को डेवलप किया? 4th एंड 5th। 8 ऐसे रहेंगे जिसमें से 4th एंड 5th ये रहेंगे। 4th है INS मालपे एंड 5th है INS मुल्की। ठीक है, पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडिया एंड USA के बीच में कंडक्ट कराई गई एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? युद्ध अभ्यास, राइट। एंड युद्ध अभ्यास का ये है 20वां एडिशन। अगर मैं बात करूं 19वें एडिशन की, तो 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था अलास्का में। अलास्का कहां पर है? USA में। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? 26,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि 240 AL-31FP एरो इंजन को प्रोक्योर किया जा सके सुकोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो किस डिफेंस कंपनी ने ये साइन किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री वेयर इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट ये अभी रीच पहुंचा वहां पर, ताकि 16वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकांडू में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो एक्सरसाइज काकांडू ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 3000 से भी ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें पर्सनल देखने को मिल रहे हैं 32 नेशन से, जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो उस मिसाइल का क्या नाम है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। देखो, अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ईस्टर्न ब्रिज, राइट। यहीं पर अगर मैं बात करूँ आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा। एंड ये अल नजा का याद रखेंगे 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट? तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हाईवे। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हाईवे कौन सा हाईवे है उसका नाम बताओ।
दूसरा, इंडिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ पर आ रहा है, उसका नाम बताओ, कौन बना रहा है वो भी बताओ। एंड तीसरा क्वेश्चन, नीति आयोग के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम बताओ। राइट, तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।